हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। दिस इज़ योर होस्ट राहुल देशमुख और आज हम लोग चेक करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने थ्रू आउट द एक्सपीरियंस यूज़ भी किया है और ये मैंने उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ भी किया है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और ये हमारी फर्स्ट स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज BPMN 2.0। सो BPMN क्या होता है एग्जैक्टली? इट इज़ बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन। तो जैसे कि आपको एक सैम्पल में फर्स्ट एक डायग्राम दिख रहा ही होगा, इट इज़ नथिंग बट process mapping or business process mapping using a diagramming method. So let's begin with this. So the very important thing is what is business process modeling notation. So सबसे पहले ये एक ग्राफिकल नोटेशन है, एक ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो होती है बिजनेसेस की उसमें क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैनर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2004 बाय बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इनिशिएटिव BPMI, एक इंडस्ट्री कंसोर्टियम है, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था। बाद में दिस गॉट मर्ज विद दिस BPMI गॉट मर्ज विद ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जो एक अगेन कंसोर्टियम है विद डिफरेंट कंपनीज, इसमें टॉप नॉच कंपनीज है कुछ, वो इसको इन्होंने मर्ज हो गया और अभी ये जो है इसका एक सर्टिफिकेशन भी है OMG की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ BPMN 2.0 is the BPMN 2.0 and it was released in 2011. So which are the prominent companies in the industry जो ये use करते हैं? For example IBM, Oracle, SAP, Microsoft, Amazon, Accenture, etc. Let's move ahead. So सबसे important कि ये क्यों चाहिए, आपको डायग्रामिंग टूल की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आप इमेजिन कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप में से सभी लोग अलग अलग लेवल्स पे बिजनेसेस में हाई पोजीशंस पे काम कर रहे हो एंड वी एवरी वन ऑफ अस नो कि बहुत बार बिजनेस प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हुए एंड नॉट ओनली जस्ट फॉर एनी सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट बट अदरवाइज ऑल्सो यू टेक इट एनी डिपार्टमेंट, आप सेल्स डिपार्टमेंट ले लो, यू टेक इट HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर और द IT डिपार्टमेंट, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना है या तो कुछ आपको न्यू प्रोड्यूस करना है या तो आपको कुछ एनहांस करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला चीज लगेगा कि आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर करने हैं एंड उसके बाद आपको एज इज क्या प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको अनलेस एंड अनटिल आप कुछ विजुअल नहीं क्रिएट करते आपको कुछ भी नहीं समझेगा। सो इस प्रोसेस के लिए इस टूल को कौन कौन यूज कर सकता है? सो ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एनी इंडस्ट्री एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री can use this tool. So for example सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेस एनालिस्ट हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, इवन द टेक लीड्स, द डेवलपर्स, राइट, द टेक गाइज, द टेकीज आल्सो विल हैव टू यूज इट, दे यूज इट एंड इससे काफी ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई होती है। देन ऑन दी अदर साइड आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, उसमें भी मैनेजर्स हो गए, ऑपरेशंस पीपल, यू टेक इट एनी डोमेन, राइट, तो उसमें भी यू हैव द प्रोसेस फ्लो रिक्वायर्ड और द फ्लो चार्ट्स रिक्वायर्ड। सो इन शॉर्ट बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन क्या करता है कि जितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। सो दिस चार्ट आई हैव गॉट फ्रॉम ल्यूसिड चार्ट्स वेबसाइट। सो इसमें एक बेसिकली एकदम सिंपल प्रोसेस दिया गया है कस्टमर का पेमेंट का, राइट, एंड उसको डिलीवरी का। सो फॉर एग्जांपल दिस it starts over here, then the payment method is identified. Well, if it is, this is the decision box, if it is check or a cash, then accept it and then we prepare the package. If it is a credit card, then we process the credit card, it is accepted and it ends. So एकदम एक सिंपल, सब बहुत ज़्यादा सिंपल ये एक प्रोसेस चार्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया हुआ है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि इस BPMN के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो BPMN 2.0 डायग्राम एंड एलिमेंट सिंबल। सो ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस डायग्राम टूल है, तो ये बना हुआ है कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एलिमेंट्स एंड सिंबल्स के साथ। तो इसका सबसे स्टार्ट होता है विथ फ्लो ऑब्जेक्ट्स। तो फ्लो ऑब्जेक्ट्स इसमें कौन से आते हैं? फर्स्ट इज इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड गेटवेज। ये तीन तरीके के फ्लो ऑब्जेक्ट्स होते हैं BPMN में। तो सबसे पहले जो इवेंट्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है? स्टार्ट है, इंटरमीडिएट एंड एंड। सो कोई भी प्रोसेस, कोई भी आप बिजनेस प्रोसेस ले लो, उसको स्टार्ट एंड एंड होना ही है। अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस कि वो कोई भी बिजनेस प्रोसेस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो कहीं पे उसका स्टार्ट पॉइंट होगा और कहीं पे उसका एंड पॉइंट भी होगा। अभी स्टार्ट के अंदर भी वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी कैन सिलेक्ट वेयर इन द प्रोसेस ट्रिगर हैपेंस, राइट, विद सेंडिंग मैसेजेस, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन सम ट्रिगर। तो वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। इंटरमीडिएटेड की एट सम पॉइंट्स इन प्रोसेसेस
the whole process or the link comes or waits for some input from some parallel process. तो उसके लिए हम लोग intermediate use करेंगे, and end is where the process ends. Going to the next flow object, that is activities. आपका start हो गया process, आपका end हो गया, but what will actually happen between that? That is nothing but the activities. So in activities we have got tasks, sub processes, transactions, and call activity. So these are nothing but what actions are happening, right? So a task is like we can take an example that for example a user, right? A user is checking a checklist, so that becomes a task for the user, right? So that is nothing but an action. Sub processes, when we go into detailing of this diagram, so one task or one process can have some sub processes, so therein we can use this. Again, for transaction also similarly, and call activity also we can use for different use cases. Then the next one is inflow object is the gateways. So for every process, right, we have seen the events, then we have seen the activities, and after that the gateways. Gateways is nothing but we all of us would have used and known about the decision boxes. So these are nothing but the gateways, as in we decide at a point wherein we have multiple options. So if we have at a gateway we have an option of yes or no, and then after that there would be two different branches. So what will happen if the answer is yes, or if the input is yes, there can be a different flow altogether, and if the input to that gateway is no, then there can be a different output altogether or a different process altogether. Now there are different types of gateways over here, which is exclusive, event based, parallel, exclusive, event based, complex, parallel, event based, and inclusive. So depending upon the use cases we can use these different types of gateways. Now coming to the next object, that is connecting objects. So in connecting objects we have again got three different types. One is the sequence flow, then the message flow, and after that the associate. So in sequence flow is how would you connect two different activities, or how would you show the interactions between the events, activities, or different objects, right? So therein you use this connecting objects. Sequence flow is nothing but in one sequence how the system would flow or the process would continue, that is sequence flow. Message flow is again a unique type of a symbol wherein you have this circle at the behind and the arrow, and this is a dotted line. So we will see it in the upcoming slide, but when we have parallel processes, so during whatever the interactions happen between these parallel processes, that happens through message flow only, and that cannot happen through a sequence flow. After that we have associate. So we also have a different type of element which is data, and if we have to show some connection between such type of artifact object or data type of object, then we have to use the associate element. Now coming to the swim lanes or pool. So what are these? So if we have to represent two different organizations, interaction between two different actors, right? So let's say there is one industry is there, so that will be one swim lane, and there are two actors into that org or that industry, so that will be one single pool, okay, and two lanes. But you also have one customer who is interacting with that, so there will be a different pool altogether and one dedicated lane for that customer. So in short, in such use case we will have two different pools and one lane. So I hope this is clear to everyone. Going to the next, artifacts. So there are three types of artifacts used in BPMN 2.0. One is data, group, and annotation. So data is nothing but wherever in the process the system is trying to fetch some data. So with some customer input, the system is trying to retrieve some data from the database. So therein we can use this data store or database elements. Group. There in a complete process, there could be a group of tasks, 2 or 3 tasks or multiple tasks, which we can show as a single group, and this is just a highlighter point, and this won't affect the complete process. Annotation is wherever we have to give more brief or more introduction, more details on any part of the process, therein we use this annotation. So these are all we have seen what is BPMN 2.0, how it was formed, a sample example, a very simple example of BPMN 2.0 use case, different elements, objects used in this
BPMN 2.0. Now let's quickly see what are the guidelines and best practices. So make sure that whatever process or logic we are trying to build is very clearly reflected through this diagram, right? So ultimately for all the stakeholders, this is meant during a demo you would explain it or try to understand with for developing some application, some product, right? So we have to make sure that this diagram depicts everything very clearly. Make the models hierarchical with processes expanding from top level diagram. So example, we have to maintain some sort of a sequence, right? Hierarchical as in we have to maintain some sort of sequence so that a user or anyone who would see that should be able to understand it very easily. Then we have to label the task wherein a user is actually using it and where a service is working on that process. So an automated and a manual task that we can specify, that we should specify over here. So a action, right? What represents an action? So the task would over here, the task represents an action that is nothing but it should be in verb or verb noun format. For example, validate order or verify credit, right? So you can imagine such sort of things you should be adding over there for better understanding. Then consistently using message flows to indicate business context of activities. The object which we have seen, message flow, you have to use it consistently for a proper clarification. And there is also a term called black box pools that we will see to show external participant and their relation to these processes, right? So in short, we have also seen the guidelines and best practices. Now today, this session, this introduction that I am giving you, this is just the basic understanding and what all BPMN 2.0 includes, right? But in the next introduction, I would take one use case and we would actually do that. These are some of the tools that we can use. For example, Lucid Chart, Microsoft Visio, Camunda, Creately, Draw.io. Okay, some of these are free tools up to some limitations into it, so you can use that, and many of these are free as well. So if you have liked this information and if you have liked these efforts, so please do not forget to subscribe and share this video. And in the next video, we will take one use case and will actually work on that and prepare that use case using all this information that we have seen today. Thank you so much. Take care.